Hey guys, so today we are going to study about the palmar arches, and the palmar arch are formed by the radial and the ulnar artery. So from the radius sides, this is the radial artery, and suppose करते हैं जो यहाँ पर flexor retinaculum है, ये flexor retinaculum है, more or less this is the position of flexor retinaculum, and this is the radial artery. ये flexor retinaculum से पहले ही it moves backward and it forms the content of the anatomical snub box. ये anatomical snub box से move करते हुए आगे की ओर जाएगी और यहाँ पर dorsal interossei muscle है. This is the position of dorsal interossei muscle, first dorsal interossei muscle. This is the bipinnate muscle. Okay, तो इसका दो हेड है. This dorsal interossei has two head, so it crosses between the two head of dorsal interossei, and यहाँ पर एडक्टर पॉलिसिस का दो हेड है. अब इसमें देखते हैं एडक्टर पॉलिसिस का दो हेड कैसे है. एक ट्रांसवर्स हेड जो कि यहाँ पर थर्ड मेटाकार्पल जो है, थर्ड मेटाकार्पल से थंब का जो प्रॉक्सिमल फैलेंज है उसके बेस पर जाती है. दिस इज द ट्रांसवर्स हेड ऑफ एडक्टर पॉलिसिस, and pollicis means thumb, and there is another head that is the oblique head of adductor pollicis, and this originate from the capitate capitate carpal bone, and these two metacarpal, the second and third metacarpal, and it insert at the proximal phalange of thumb. Okay, base of the proximal phalange of the thumb. So these two head और यहाँ पर डॉर्सल इंट्रोसै मसल्स का दोनों हेड, ये दोनों हेड के बीच से रेडियल आर्टरी आगे की ओर आएगी, यहाँ पर आगे की ओर आएगी और बनाएगी डीप पाल्मर आर्क. दिस इज द डीप पाल्मर आर्क फॉर्म बाय रेडियल आर्टरी. ओके, सो एंड दिस डीप पाल्मर आर्क सप्लाइज द बोथ साइड ऑफ द थंब बाय फॉर्मिंग pollicis, princeps, pollicis artery supplies the both side of the thumb, and is also supplied the lateral side of the index finger, actually the radius side of the index finger, so this is known as radialis indicis artery. Okay, so these are the branches of deep palmar arch. Now the superficial palmar arch. The superficial palmar arch is formed by, this is the ulnar artery. अल्नर आर्टरी जो है यहाँ पर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल, उसके ऊपर, अंदर नहीं जाएगी, इसके ऊपर से ही इस तरह से आएगी और इट मूव्स मोर डिस्टली देन द डीप पाल्मर आर्क. इट मूव्स मोर डिस्टली देन द डीप पाल्मर आर्क एंड फॉर्म सुपरफिशियल पाल्मर आर्क. एंड दिस सुपरफिशियल पाल्मर आर्क supplies all these digit by first forming common digital artery. This form three common digital artery and bifurcate. These three common digital artery bifurcate and supply the, this is the medial side of the index finger. Okay, this is the lateral side of the third finger. Okay, now these three are common digital artery. This also bifurcate and supplies the medial side of third finger, and this supply the lateral side of fourth finger or ring finger. This also bifurcate and supplies the medial side of ring finger, and another branch supplies the lateral side of fifth finger. So these are proper digital artery. These all are proper digital artery. This are proper digital artery and supplies the digit. Okay, this was radialis indicis artery. These two were princeps pollicis artery. Okay, now लिटिल फिंगर का जो लेटरल साइड है, सॉरी मीडियल साइड, वो तो बच गया. तो उसके लिए यहाँ से जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्क है, यहाँ से डायरेक्ट एक ब्रांच आती है एंड इट फॉर्म प्रॉपर डिजिटल आर्टरी एंड सप्लाइज द मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर. सो दीज आर द पाल्मर आर्केस. नाउ हाउ दिस पाल्मर आर्क कंप्लीट, ये कंप्लीट किस तरह से होती है. ओके, सो देखो यहाँ पे जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्क है अल्नर आर्टरी के द्वारा जो बनाया गया है, यहाँ पर
फ्लेक्सर रेटिकुलम से क्रॉस करते हुए यहाँ पर इसका एक ब्रांच जाता है जिसे कि डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी कहा जाएगा, और ये डीप ब्रांच ऑफ जो इसका था रेडियल आर्टरी का, उसके साथ मिलकर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर रेडियल आर्टरी जो बैकवर्ड मूव कर गई थी, यहाँ से एक रेडियल आर्टरी की ब्रांच जाएगी और इट मूव सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, and it move distally and form and join with the superficial palmar arc, and by this method the palmar arc get completed. Now we are going to see the diagram of these palmar arc. Okay, so this was the, let's suppose this is the flexor retinaculum, this is the flexor retinaculum. Okay, this was the radial artery coming forward on the radial side, and this move through the anatomical snub box. Let's suppose this was an anatomical snub box, and this come forward, okay, from the dorsal interossei and between the two head of adductor pollicis, and this form deep palmar arc. Okay, and this deep palmar arc form princeps pollicis artery, pollicis means thumb, and a common radialis indicis artery. Okay, now this is the ulnar artery come from the ulnar side and superficialis to the flexor retinaculum. It move more distal than the radial artery, deep palmar arc, and form superficial palmar arc, and this superficial palmar arc supply these all digit, and this superficial palmar arc supply these all digits, and this form a common digital artery at the webbed space, and this common digital artery bifurcate and supply the digits like this. Okay, so all supply digit, but the यहाँ लिटिल फिंगर का जो मीडियल साइड है वो बचा हुआ है, तो वहाँ से एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी आएगी सुपरफिशियल पाल्मर आर्क से, सप्लाई द मीडियल साइड ऑफ द little finger. Okay, these are the proper digital artery, sorry, these are the common digital artery, and these all are proper digital artery. This is also proper digital artery. This was radialis indicis artery formed by deep palmar arc. Radialis indicis artery, this is the princeps pollicis artery, and this supply the both side of the thumb. And the completion of this palmar arc, this is the deep branch of ulnar artery. Okay, this deep branch of ulnar artery meet with the deep palmar arc and completes it, and there is a branch of superficial branch that comes superficial of the flexor retinaculum of the radial artery, come more distally. This is the superficial branch and attached with the superficial branch, superficial arc, and completes it. So that's all. This is the complete palmar arc.